Mr. K.K. Srivastava, who's the member Traffic Railway Board, and on his left is Ms. Vijaya Kant, who's the Finance Commissioner with the Railway Board. Ms. Kant, I'm going to start with you. The Prime Minister, when he talked about the rail budget this time, said it's a reflection of the railway's true finances. How realistic do you think are the budget estimates for this year? You see, we worked out the numbers very carefully. Okay. Our earnings projection was based on some very clear data based on our traffic projections, and our expenditure, what we would be spending next year on our revenue expenditure has also been based on very realistic assumptions. So there has been no window dressing. And if we have pegged the operating ratio in the current year at 88.8 and next year at 87.8, it is eminently doable. It's a very honest budget. It's a very honest budget. Exactly वही दूसरा सवाल सर मैम मेरा ये था कि ऑपरेटिंग रेशियो जो आप कह रही हैं कि आपने 1% घटाने का लक्ष्य रखा है, इसका मतलब 100% कमाने के लिए आपको 87 रुपए ही खर्च करने पड़ेंगे। बहुत ही एक खुशी की बात है और मतलब उस पे जितनी तारीफ की जाए उसकी कम है। लेकिन ये कैसे होगा, कैसे आप रेवेन्यूज को बढ़ा पाएंगे, ये देखते हुए कि केवल 5% की ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ हो रही है, जिसका रिफ्लेक्शन आपके रेलवेज, फ्रेट और पैसेंजर ट्रैफिक पे पड़ता है, ये कैसे हो पाएगा मैम? नहीं, ये संभव है क्योंकि ऑपरेटिंग रेशियो इस साल का तो 88.8 होगा और this is for the first time since 2007-8 that is coming below 90%. And as I said, it's a very realistic number because we had recently rationalized our fares, and we have also come up with a fuel adjustment component which will neutralize the impact of the diesel and the electricity tariffs. So, though it will not fetch us additional revenue, we don't lose out on that. But ma'am, when we talk about that fuel adjustment component, now at a time when we want more competitiveness on the freight side from the railways, how do you see that balancing act when you want more competitiveness at this time? No, this fuel adjustment, we are only recovering what we would incur. Okay. And it is worked out on a very logical basis. Like if you take, say, if the base freight is about 100 rupees, we have worked out what would be the diesel input on that, what would be the electricity input on that, what would be the balance, and on that, if the increase in diesel is about 39%, we have worked it out actually. So that is how we have arrived at neutralizing the impact. It's a very logical one, and I don't think because the road also commensurately increased their fares, their charges. So we do not expect to lose out. Okay. के श्रीवास्तव जी, आप पे आते हैं, मेंबर ट्रैफिक हैं आप। ट्रैफिक आपने प्रोजेक्ट किया है कि 5% से ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है इस साल और उस बेसिस पे आपने सारे अनुमान लगाए हैं। एक जो बड़ा सवाल सभी के दिमाग में था कि क्या यात्री किराए एक बार फिर से बढ़ाए जा सकते हैं इस बजट में, यानी जो कि नहीं हुआ, हालांकि कुछ सरचार्जेस बढ़ाए गए हैं। लेकिन एक सिग्नल जरूर दिया है रेल मंत्री ने, ये कहा है कि अगर 5 से 6% यात्री किराए में बढ़ोतरी होती है तो आप ज्यादा सुविधाएं दे पाएंगे यात्रियों को। ऐसा संभव होगा और हम देख सकते हैं कि ऑफ बजट एक तरह से हाइक हो सकती है क्योंकि सुविधाओं की जरूरत है। नहीं, अभी देखिए जो इंडिकेशन मंत्री ने दिया है कि पैसेंजर किराया हमने नहीं बढ़ाया, उसका कारण ये था कि अभी जनवरी में किराया बढ़ाया था, तो अभी एक झटका दिया जा चुका था। इसलिए हमने तय किया है कि पैसेंजर एरिया में हम 850 करोड़ रुपए एब्जॉर्ब करेंगे, अभी नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन ये भी कहा गया है कि फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट रहेगा। कल को फिर मान लीजिए अगर दाम बढ़ते हैं फ्यूल के तो ऑप्शन हमारे पास है, तब फिर हम देखेंगे क्या बढ़ाना है। फ्रेट भी बढ़ सकता है, पैसेंजर भी बढ़ सकता है बाद में। और ये तो जैसे एफसी ने कहा है कि न्यूट्रलाइज कर रहा है, ये हमको एडिशनल मनी नहीं दे रहा है। जो पैसा मेरा जाने वाला था वो इधर से आ रहा है। जहां तक सवाल पैसेंजर की सुविधाओं का, यात्री सुविधाओं का है, उस पर हमारी तवज्जो बढ़ी हुई है और इस साल हमने 1200 करोड़ का उस पर आवंटन किया हुआ है एमिनिटीज के लिए। 880 करोड़ लास्ट ईयर था तो उससे बढ़ाया हुआ है, तो ये हमारी प्राथमिकता दिखाता है। So, but also this marginal increase that we're seeing in those supplementary charges, those surcharges on the tickets, how much is that going to bring into the kitty of the railways? See, those revision had become due because of the inflation which has crept in over years. They were last fixed sometimes in 98, somewhere it is in 2005, so 15 years and 8 years gap. So we had to neutralize that, the inflation part of it. That has been done. As far as mopping up is concerned, we hope to mop up including all 5 charges which we have raised
About 880 crores. And how much is, if you could give us an example of how much it would affect the ticket price for a passenger, is that something you can share with us? See, you can see that these are not the charges based on distance traveled or basic fare as such. They are fixed charges. Reservation fee, for example. Whether you travel 50 kilometers, you travel 500 kilometers, you pay the same money. Okay. Cancellation charges. The ticket is for Bombay or for Delhi or Madras or Chandigarh, you pay the same money. Okay. So it can't be really calculated based on that what percentage. जी, अगर पैसेंजर अमेनिटीज की बात करें शास्त्री जी, बहुत सारे वायदे किए गए हैं। सेलेक्ट ट्रेन में वाईफाई होगा, एसएमएस की सुविधा होगी, आदर्श स्टेशन की संख्या बढ़ाई जाएगी, आप नई अनुभूति कोच जो है वो लाने जा रहे हैं। एक ऐसी चीज, मतलब एक जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि आप जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी के ऑगमेंट कीजिए, आप नई घोषणाएं क्यों करते हैं और फिर उसको इंप्लीमेंट करने के पीछे क्यों जाते हैं? क्या कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी है इस बार? नहीं, जो हमारी एग्जिस्टिंग सुविधाएं हैं उनको तो मेंटेन करने की हमारी प्रायोरिटी और स्ट्रेटेजी है ही है, वो तो हम कर ही रहे हैं, उसमें तो कहीं कमी हमारी नहीं है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन लोगों की बढ़ रही है, अपेक्षाएं बढ़ रही हैं, लोगों के रहने का स्टैंडर्ड इंप्रूव कर रहा है, तो अच्छी चीजें उम्मीद करते हैं ट्रेन में आके भी हमारे। लेकिन अगर आप पिछले 5 साल 10 सालों के भीतर देखें तो स्टेशनों पे और ट्रेन की सफाई के स्तर में फर्क आया है। जी, जब हमने जो है अभी ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सर्विस शुरू करी है, जो कि गाड़ियों में सफाई वाले हमारे कर्मचारी साथ में चलते हैं और यात्री की डिमांड पे आके वो टॉयलेट साफ करते हैं, कोचेस साफ करते हैं, झाड़ू लगाते रहते हैं, ये व्यवस्था पहले नहीं थी। क्लीन ट्रेन स्टेशन हम लेके आए कि सर्टेन स्टेशन नॉमिनेट किए हुए हैं जहां पे आकर के फिक्स सफाई वाले आके ट्रेन की सफाई करेंगे, जहां गाड़ियां 20 मिनट रुकती हैं। तो ये सारे प्रयास हमारे हो रहे हैं ताकि सफाई की व्यवस्था बढ़े, यात्री सुविधाएं बढ़े। वाईफाई के भी हमने शताब्दी में चलाया है, सक्सेसफुल हुआ है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। उसमें कोई बुराई नहीं है कि हम अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं तो और भी दें। बिल्कुल। और जो पहले चल रही है उनको तो मेंटेन करना ही है। Ms. Kant, I'm going to come back to you and talk, there's something in the budget which it says about the Rail Tariff Authority. Can you share with us some more details on that tariff authority? How soon can we see it? See, this idea was actually indicated in the last budget also. And we felt the pressing need for having an independent authority who could give a very detailed indication of what should be the structure of the fares and freight. So now we have made out the paper. The modalities are now under consideration it's under interministerial consultation now. And very shortly we expect some feedback and then maybe we'll be able to implement it. एक क्रिटिसिज्म ये आ रहा है मैम कि अगर आप अथॉरिटी को रेलवे बोर्ड से अलग करती हैं तो इसकी वजह क्या है? क्या उसमें आप ज्यादा इंडिपेंडेंस चाहती हैं या फिर ये एक तरीका है फ्रेट्स और फेयर्स को एक तरह से डीरेगुलेट करने का? नहीं, ये डीरेगुलेशन नहीं होगा, वो तो इट विल नॉट बी इनिशियली इन द नेचर ऑफ अ रेगुलेटरी अथॉरिटी। उनका इनपुट्स जो है वो एडवाइजरी भी हो सकता है और इट इज अल्टीमेटली फॉर द रेलवे मिनिस्ट्री ऑल्सो to take what is relevant from their suggestions. So something more clarity on this after would this emerge after the interministerial consultation is over. All right. प्रियंका, अगर बात करें, हम लोग इतना डिस्कशन कर रहे हैं रेलवेज पे और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसकी बात लगातार की जा रही है। पिछले प्लान के इससे पहले इसका कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, कॉस्ट जो था 26,000 था, अभी वो बढ़ करके 60,000 80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। मैम ज्यादा बेहतर बता पाएंगे उसका रियलिस्टिक फिगर, उसके बारे में कुछ बात करते हैं और क्या कुछ किया गया है इस बजट में? Yes, we have the details of what's really been done in this budget, but what about the funding of that 1,500 kilometers? I mean, we're looking awarding of 2 more contracts, but how do you see that funding coming through for that? Because we've seen that PPP model has been under pressure. The PPP model it's yet to take off on the DFC. But we have already taken a loan from JICA and World Bank. And that is quite substantial. It is around 50,000 crores. So the funding is not really an issue. And right now we also get gross budgetary support from the Ministry of Finance. But yes, concerns are there. And we hope that we'll tide over these problems and the freight corridor would take off as planned. But ma'am, also there's this debt service fund that you've talked about in this budget. Now, what kind of instruments are we talking about for this debt service fund? How is that fund going to service the debt in the future? See, we realized that with these loans we have taken from JICA and World Bank especially,
you need to service these debts. Sure. And that servicing will have to happen very quickly. It has to practically start from this year. The interest component has to be worked out. The principal would have to be returned. So we decided we will now create a separate fund where we apportion a portion of our earnings, internal generation, we set aside a minimum of about 20% into this fund, and there will be no withdrawals from this for any other purpose. So this would take care of all our debts, But this is just about like 4,000 odd crore rupees. No, this year. This is the first year. This is the first year, and we hope to build up this substantially. This would also address our requirements when the next pay commission is implemented. Okay. नेक्स्ट पे कमीशन की बात भी शुरू हो चुकी है और उस पर काम भी शुरू हो चुका है. देखते हैं, क्योंकि रेलवे सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है देश का, 14 लाख से ज्यादा, और कुछ रिक्रूटमेंट इस बजट में भी 1.5 लाख बिल्कुल संभावित है, तो शायद उसका प्रोविजनिंग भी मैम आपको करना होगा. काफी टफ जॉब है आपके लिए. थोड़ा सा नंबर क्रंचिंग करते हैं. आपने 63,000 करोड़ से ज्यादा का एक बजट दिया है इस साल में, और जो आपने ब्रेकअप्स दिए हैं वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है. आप थोड़ा सा मैम बताएंगे कि किस तरह से आप जो मार्केट बोरोइंग है या पीपीपी है या फिर आपके इंटरनल रिसोर्सेज आप कैसे रेज करेंगे और कैसे वो आंकड़े पर पहुंचिए? 26,000, 63,000 is the plan outlay, total plan size. The breakup is 26,000 from gross budgetary support. जी मैम. And about 2,000 is for the railway safety fund. 15,000 will be our market borrowings, basically from our Indian Railway Finance Corporation. About 6,000 will be towards PPP. And from our internal generation, we are financing the plan. Basically, we finance our replacements and renewals and development from our internal generation. So we have allocated a little over 14,000 crores. That is a broad breakup of 63,000. इन सारे ब्रेकअप्स में सबसे कमजोर कड़ी कौन सा लगता है और कहाँ मुश्किल आपको दिखाई देती है कि वहां से पैसा आने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है? कहाँ पे पेंशन है आपको? Basically, I think PPP, the model would have to be very clearly worked out. PPP, we would really have to work at it to realize that 6,000 crores. But on other fronts, I do not see any difficulty. All right. Mr. Srivastava, I'll come back to you. This time the focus has been a lot on the safety as well, the safety features that have been talked about in this budget. The corporate safety plan, which is an ambit of about 10 years, what kind of a scope do you see for that? The corporate safety plan, which we prepared 10 years back, we were talking about that when we got the safety fund from the Prime Minister of India. That time we had made a promise that our accident rate, which was about 0.47 accidents per million passenger train kilometers, will come down to 0.17 by 2012-13 in 10 years' time. We already have come down to 0.14 in last year, and we hope to go down to 0.13 in this year. So that objective has been achieved. We are quite concerned with the safety, and touch wood, the number of accidents have been coming down. Casualties, of course, are a matter of chance, because you may have one accident killing 250 people. You may have 20 accidents killing only 5 people. This is a different matter. It's a chance. But number of accidents have certainly come down. The track has improved, rolling stock has improved, a lot of input has gone into that. That is why this has happened. Derailments have come down. True. But we've also seen some new ideas, especially where SPOT is concerned. But, there are concerns that 160 kilometers per hour trains, are our tracks well equipped to handle those? The disaster management train. Existing tracks in Indian Railway already are running at 130 kilometers per hour. Rajdhani is running 130 kilometers per hour. So we are quite capable of doing that. Up to 160 we can easily go with slight inputs. So that is not a major concern. Only thing we need is a rolling stock who has the capability of running at that speed. Locomotives which can haul at that speed. That is what SPOT is now trying to get at. The SPOT is not an idea which is invented today. SPOT we are talking about last 10 years almost now. The SPOTs are there. Now we are talking about is speeding them up. Implementation. Implementation already have been implemented. Some have come already. Some are coming in the process. Speeding them up so that we can reach the accident site faster. बिल्कुल सर, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, जब हम बजट पढ़ रहे थे